welcome to our channel, Study Salary. So without wasting time, I am going to start my class. So in today's class, I am going to teach you equation of motion. So in the syllabus of class 9 syllabus में we have only three equations. First equation of motion, second and third equation of motion. तो पहले देखते हैं कि all the three equation of motion क्या relation देते हैं, क्या देते हैं. And in the syllabus of 11th, there is the fourth equation of motion. So the fourth equation of motion है we all are read in the 11th class, not in 9th. So आज मैं आप लोगों से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा और मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे दो तरीके से प्रूव कराऊंगा, वन बाय द इक्वेशन एंड सेकंड बाय द ग्राफिकल मेथड. और याद रखिएगा, इन योर एग्जाम इन द क्लास 9th एग्जाम they only ask the graphical representation or the graphical derivation of equation of motion. So you all remember both the two, because in 11th first one is the by the method of means by the way of proving the equation of motion by the equation method, that will be very important in the class 11. But in the 9th they only ask the graphical representation, but for your kind of knowledge you make all the two in your mind. Okay, so I am going to start what equation of motion. Equation of motion. Equation of motion is basically what it gives the equation, means it gives the relation between speed, distance, time, how the body is travel, how the body propagate in a motion, means how body is travel around us. That is we know get from the equation. Means from the equation we can easily know which type of motion is shown by a body. Okay, so before going for all the three equations, we have to know something, that u is denoted for initial velocity. Means by u we denote initial velocity, by v we denote final velocity, by t we denote time, by s we denote distance, and by a small a, that is acceleration. So हमेशा याद रखिएगा जब भी आप लोग के पेपर में प्रूविंग आएगी, so you have to mention all these 5 things. अगर आपने मेंशन नहीं किया तो how teacher will come to know that what is u, what is v. हमको पता है कि टीचर को नॉलेज होता है, बट आपको कोई भी गलती नहीं करनी है आपके पेपर में. तो याद रखिएगा u denote what initial velocity, capital V denote final velocity, small t time, s distance, and a is denoted the acceleration. So हम आते हैं जो पहला हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट equation of motion. So the first equation of motion is what? It gives the relation between v equal to u plus at. This is the first equation of motion. V is equal to u plus at. So v is the final velocity, u initial, a acceleration, and t is the time. So in the first equation of motion, it generally tell about the velocity of a body at time t. At time t, what is the velocity of the body? At time t, what is the velocity of the body? It is denoted by the first equation of motion. मतलब पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको क्या मिलता है कि टाइम t पे वेलोसिटी क्या है बॉडी की, टाइम t पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, वो हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देता है. याद रखिएगा, कोई भी अगर आपसे पूछता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन denote what? The first equation of motion is generally given you what? The velocity of a body at particular time t. तो at particular time t पे it denote the velocity of the body, कि वो किस velocity से body move कर रहा है. That is given by the first equation of motion. तो हम इसकी प्रूविंग करते हैं. तो इसकी प्रूविंग हमने पहले बताया कि हम जो आज प्रूविंग करेंगे वो इक्वेशन से करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी प्रूव इट बाय द ग्राफिकल मेथड. ओके, तो अभी हम करते हैं इसको. जब इसकी हम प्रूविंग करेंगे तो हमने दिया, हमको पता है कि एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी. हमने पढ़ा है, और आपको अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मोशन थे, मतलब क्लास 9 का मोशन थे, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सेलरेशन का पूरा डिटेल बताया था. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी minus initial velocity upon time, and acceleration is denoted by a.
चेंज बोला है ना, तो चेंज इज व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब हमारे पास कितना इनिशियल में था और कितना फाइनल में है, उन दोनों में माइनस करने तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर चेंज कितना है, v माइनस u। हमने t को इधर शिफ्ट कर दिया तो this is equal to at equal to v minus u। एंड हमको पता है ना, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि जो हम v है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, स्मॉल v मतलब ये नहीं, स्मॉल v मतलब दिस, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो u इधर नेगेटिव में, इधर आएगा पॉजिटिव, सो v इक्वल टू u प्लस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हमको आसानी से मिल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। सो ये समझ में आ गया, हमने क्या किया, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हमने पहले पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करा v माइनस u अपॉन t, t हमने इधर से किया तो दैट इज 18 v माइनस u, u इज इन द माइनस साइन, सो आफ्टर रिप्लेसिंग द पोजीशन फ्रॉम द इक्वल साइन देन became a positive, so u plus 80, तो v equal to u plus 80, this is the first equation of motion। so first equation of motion gives what, first equation of motion gives the speed या velocity of a body at a particular time t, means at time t पे what is the velocity of a body that is given by the first equation of motion। okay, तो हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखिए क्या देता है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली गिव्स the distance traveled by a body, the distance traveled by a body at that interval of time, means at time t पे what is the distance covered by a body that is given by the second equation of motion। so second equation of motion is what, s equal to ut plus half at square, s equal to ut plus half at square। so s is what, distance, velocity, time, acceleration। so we have to find a that equation where you can easily find the equation s, u and t, and you have one equation that is the first equation which is v is equal to u plus t। so remember this equation also, because in proving this equation we have to require this equation also, means you also use this equation। so second equation of motion is generally gives the distance traveled by a body in time t, means time t में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज गिवन बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम इसकी प्रूव करते हैं। सो यू नो दैट व्हाट, एवरेज वेलोसिटी, मैंने बताया था इसको प्रीवियस वीडियो में, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, v इक्वल टू u बाय t, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, ये मैंने पहले बता चुका है जब मैंने वेलोसिटी पाया था प्रीवियस पार्ट में, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में इसको भी देख सकते हैं। अब हमको ये भी पता है that is distance traveled, distance is equal to what, average velocity into time, ये हमको पता है। तो distance is equal to average velocity into time, तो average velocity we have a value of average velocity that is v plus u by 2, so in place of average velocity we can use v plus u by 2, so on place of average velocity we write v plus u by 2 and time is represented by t and you know that distance is represented by s। you mentioned अब हमको पता है that is v is equal to u plus 18 from the first equation of motion। हमको ये बात पता है कि v is equal to u plus 18 from the first equation of motion, so you can also use that। तो v is equal to u plus 18 u by 2 into t, and this comes from what, first equation of motion, first equation of motion, u 2u plus 80 by 2 and multiply by what, t। so अगर हम t को अंदर देते हैं, this is equal to 2ut, this is equal to 2ut and this is equal to 80 square, so s equal to what, t अंदर आएगा, that is 2ut plus 80 into t, 80 square, denominator 2, so 2, अब 2 का हम अलग अलग लिखते हैं, तो 2 इधर कैसे कैंसिल, that is equal to ut and this is half 80 square। this is the second equation। समझ में आ गया? second equation gives what, second equation gives
द बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस इन अ टाइम टी, मींस टाइम टी में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज गिवन बाय द व्हाट, दैट इज गिवन बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर लिया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया तो हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली व्हाट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन is denote the relation between speed and distance. Third equation of motion gives the relation between speed and distance. तो speed और distance के बीच में relation देता है, तो इससे हमको ये पता चल गया कि वो यही बताएगा कि बॉडी ने कितना स्पीड एक्वायर किया, कितना स्पीड चला, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब बॉडी एक्वायर विच स्पीड इन ट्रैवलिंग दैट डिस्टेंस। या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको क्या देता है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमको क्या दिया, फर्स्ट इक्वेशन दिया वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम टी, सेकंड इक्वेशन दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम टी। अब थर्ड है वो क्या देगा, थर्ड ये देगा वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय योर बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s, मतलब s डिस्टेंस चलने में बॉडी ने कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, बॉडी ने कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, किस वेलोसिटी चल रहा है, दैट इज गिवन बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज बेसिकली व्हाट, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कहीं आप देखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a, तो ये इधर पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, आप लोगों को क्या चीज पता है, हमको ये पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड इक्वेशन, ठीक, और जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सो इफ वी शिफ्ट v तो v minus u by a equal to t, because if we see the third equation then there is a no symbol of t, means यहाँ पे कोई भी टाइम का सिंबल नहीं है। So we have to eliminate t from the second equation। सेकंड इक्वेशन में से अगर हम t को एलिमिनेट कर दिया तो इजीली वी गेट द थर्ड इक्वेशन। तो हमको t की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट इक्वेशन, तो हमने t की वैल्यू निकाली v minus u by a। अब दिस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, t is equal to what, v minus u by a, and we put that value in the second equation of motion to get what, to get the third equation। So हमने वैल्यू पुट के जैसे तो हमको क्या मिला, s equal to u, in place of t we write what, v minus u by a, okay, plus half a v minus u by a whole, okay, you get it। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलता है, ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। यहां से हमको क्या मिला, uv, you get uv, यहां से माइनस u स्क्वायर बाई a से ये एक कैंसिल करके स्क्वायर है तो बचेगा क्या, प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv बाई 2a। क्यों, क्योंकि 2 ये है और a और दिस इज a स्क्वायर, तो a कैंसिल दैट इज। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, इसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, एलसीएम लेंगे तो 2 एक डिनोमिनेटर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2uv दैट इज 2uv minus 2u square, and this will be same because 2a divided by 2 a 1 and 1 multiply this remains same, so this is plus v plus u square minus 2u plus v square plus u square minus 2uv, so minus 2uv plus 2uv cancel out, minus 2u square plus u square that is minus v square, so you get what, this is equal to s, तो s is equal to what, v square minus u square by 2a, and we shift 2a this side, so we get v square equal to u square plus 2as, or v square minus u square equal to 2a। So we easily get the proving of all the three equations by the equation method। पेपर में जनरली इक्वेशन मेथड से नहीं पूछेंगे, पेपर में जनरली ग्राफिकल मेथड से पूछेंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो हाउ यू प्रूव all the three equation of motion by the graphical way।
ठीक है, वो भी बहुत आसानी से जाएगा, जैसे आसानी से ये। बस इसको याद रखिएगा माइंड में, क्यों? क्योंकि ये आपके काम में आएगा। अगर ये आपको आएगा तो ग्राफिकल मेथड और आसानी से आएगा। और सिर्फ 9th में तो आपको पढ़ना नहीं, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 11th 12th में साइंस ले जाएंगे, सो इन दैट टाइम इन द 11th देयर वी आल्सो अगेन वी फेस द व्हाट इक्वेशन ऑफ मोशन एट 11th एंड देयर वी नीड टू प्रूव दैट बाय द इक्वेशन मेथड। सो वहां पे इसका हम यूज करेंगे, ओके। और 11th में हमको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ना है। सो फॉर टुडे क्लास I think that is enough. So meet in the next class. Thank you guys and share, subscribe करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग करते हैं।